Hi guys, how are we doing? I'll just quickly explain about the clay pots that I use for cooking in English, and then I'll just explain it in Hindi as well. So these are the clay pots that I use. They are not glazed, so it doesn't have the shiny coating on it, so it's natural. I was doing a lot of research as to what is the best cookware, and they said it's clay, so then I bought these clay pots and I'm using these for the last almost 1 year. And this is the jug where we store our water, and the cups. The water is always nice and cool in here. Benefits of using clay pots are that they have very important nutrients that goes into your food. Nutrients like calcium, phosphorus, iron, magnesium and sulfur, which is really beneficial for the body. Clay is also alkaline, so it neutralizes the acidity in the food, which makes it easier to digest. There are some things that you need to know as to how to manage these pots, otherwise it can break very easily. But I've been using them for a while and it hasn't, which is great, and I've been cooking everything in it. I can share a link at the bottom as to how to prepare the pots before you use it for the first time, and some other stuff that you need to know about it. Okay, and this is the Iron Kadhi that I use, so you can't cook tomatoes and any citrus stuff in it. The only thing is that your food kind of goes a little dark, so if you're making dal and stuff, so the food will just go a little bit dark because of the iron in it. How to manage this? What I do is, after cooking, I transfer my food into a glass container, and then I straight away wash it, wipe it, and I oil it so that it doesn't rust. So before using it as well, I wash it thoroughly, and then I cook in it. So there are heaps of things that I cook in the Iron Kadhi as well. हिंदी. So ये है क्ले पॉट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ. तो ये ग्लेज्ड नहीं है, मतलब इनमें वो शाइनी कोटिंग नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है. ये है जग जिसमें पानी स्टोर करते हैं हम, ये कप्स. और जो मैंने रिसर्च किया है उसके मुताबिक क्ले पॉट्स ही सबसे बेस्ट है कुकिंग के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है और इनमें बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को नीड है. न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और सल्फर, जो कि पकाते वक्त वो खाने में चला जाता है, तो हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है फिर. और ऑल्सो क्ले अल्कलाइन है, तो ये क्या करता है, जो भी एसिडिटी फूड है, एसिड वाली फूड है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण डाइजेस्ट अच्छे तरीके से हो जाती है हमारी बॉडी में. फिर वो इसको मैनेज करने के लिए, क्ले पॉट्स को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि ये बहुत इजीली ब्रेक हो सकती है. तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी. और डायरेक्ट इसको हीट पे नहीं रख सकते, इसमें पानी, दाल बना रहे तो पानी होना चाहिए, तेल होना चाहिए बिफोर आप इसको स्टोव पे डालते हैं. कोई भी स्टोव पे चलता है. आई हैव गॉट एन इलेक्ट्रिक स्टोव, सो इलेक्ट्रिक स्टोव है मेरे पास, सो आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ व्हाइल एंड ये ब्रेक नहीं हुआ है. तो मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगी कैसे इसको मैनेज करना है. ओके, एंड आई थिंक इट्स one of the best decisions I've made to swap my cooking pots to these. Thank you. Hope this helps you.